Hello to all those who are watching my video, and this is a video for the students of class 11th biology, and the topic is vertebrata, and topic is from the chapter animal kingdom. Okay, in the previous three videos I have covered invertebrates and hemichordata. So this is vertebrata. Okay, word vertebrata from the vertebral column. So, vertebrata means those which possess notochord in the embryonic period, and later on in the adult stage this is replaced by the means in the adult you can see this is replaced by vertebral column. So from here only the word vertebrata, okay, this uh, this has come. Okay. Now further, this subphylum vertebrata, it is divided into the divisions, two divisions, Agnatha and Gnathostomata. When we say Agnatha means those animals which lacks jaw, and Gnathostomata means which bears jaw. Okay, this jaw. So and further, Gnathostomata is divided into super class, that is Pisces and Tetrapoda. Okay, so just through the this flow chart you can just understand very well. This will help you. Okay, you can see vertebrata is having two divisions, Agnatha and Gnathostomata, and Agnatha is having single class, that is Cyclostomata, whereas Gnathostomata is having two superclass, that is Pisces and the Tetrapoda. So this video will cover till Pisces. Okay, that is Chondrocthies and Osteichthyes, two classes I'll cover. So begin with Cyclostomata, as I told you, Agnatha. Okay, so Cyclostomata, all those animals which are having the circular means animals means we are talking of the fishes, circular mouthed fishes. They are kept under this, and they are ectoparasites on some fishes. Okay, they are ectoparasites means body के ऊपर बाहर की तरफ ये parasite हैं, and they have the sucking and circular mouth without jaws, क्योंकि ये suck करके food को लेते हैं. Okay, they do not require any jaws, so that's why their mouth is sucking, and the body is not having any scales, like you know very well fishes के पास scales होते हैं body पर इस इनके पास scales नहीं होते. Okay, and their they have the gills for respiration. Okay, and vertebral column, that is cartilaginous means cartilage का बना होता है, and circulation, that is of closed type, and they are marine but migrate to fresh water for spawning. Okay, spawning and die after few days. After spawning they die. Okay, and larva, they return to seas after metamorphosis. ये एक नई चीज जानने के लिए मिलेगी कि आफ्टर स्पानिंग ये जो फिशेस हुआ करती हैं ये मर जाती हैं, और इनके लार्वा जो है वो फ्रेश मीन्स फॉर स्पानिंग दे मूव टू फ्रेश वाटर. This is a unique thing in them. Okay, and we have the example of lamprey and hagfish. So see, this is lamprey. You can see its mouth is circular and is sucking type. Now, Chondrocthies. This is we are talking of the Gnathostomata. Okay, Gnathostomata. So it is having the two class. One is Chondrocthies and other one, next one will be Osteichthyes. So Chondrocthies, they are marine. They have the streamlined body. And Chondrocthies नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो skeletal है एंडोस्केलेटल वो कार्टिलेज का बना होता है. तो ये जो कॉन्ड्रा वर्ड है वो कार्टिलेज के लिए यूज होता है. ओके, इट इज रिलेटेड टू द कार्टिलेज. तो ये कॉन्ड्रक्टाइज ऐसे याद रख सकते हैं, ये कार्टिलेज का बना उनका एंडोस्केलेटल होता है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड. ओके, कोल्ड ब्लडेड. अब ये वर्ड कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, मीन्स दे डू नॉट हैव द दैट इज
means a feature of maintaining their body temperature. Okay, so they are the cold blooded. They have the tough skin and they have the scales as well. And uh, gill slits are there, and they do not have the operculum. ओके, ओपरकुलम एक फ्लैप होता है जो गिल्स के ऊपर होता है, बट इनके पास नहीं हुआ करता. दे हैव पावरफुल जाज एंड आर प्रेडेटर्स. इनमें एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं होता. एंड हैंस टू अवॉइड सिंकिंग स्विम्स कॉन्स्टेंटली. ये एक बात है कि इन्हें पूरे समय तैरते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी. ओके, तो ऑल द टाइम दे स्विम, कॉन्स्टेंटली दे स्विम. देयर हार्ट, फिशेस का हार्ट जो होता है वो इट इज टू चेम्बर्ड एंड इज कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, and fertilization is internal fertilization and many of them are viviparous. Okay, and हम example की बात करें तो electric organ is present, सभी में नहीं. Okay, it is present in the torpedo. poison sting present होता है ट्राइगॉन के पास, और उसके example है स्कॉलिडॉन, that is dogfish. Okay, so ये सारे मेंबर इसमें आया करते हैं. You can see here trigon and the scoridon. Osteichthyes. Osteichthyes means वो जिनका एंडोस्केलेटन जो हुआ करता है वो बोनी होता है. ओके, बोनी फिश है. दीज आर बोनी फिशेस. ओके, दे आर मरीन ऑल्सो एंड फ्रेश वाटर ऑल्सो. पर इनके पास important thing is that they have the bony endoskeleton and streamlined body, 4 pairs of gills and has operculum. means gills जो होते हैं वो covered होते हैं एक flap से, और उस flap को कहते हैं operculum. and skin is having the scales. इनके पास air bladder present होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल्स के पास एयर ब्लैडर भी नहीं होता और ओपरकुलम भी नहीं हुआ करता है. ओके, and they too have the sexes are separate. And example we have of hippocampus. Okay, flying fishes, rohu, catla, these are the examples. So you can see here seahorse, you can see catla, protopterus. Protopterus को ध्यान से देखो, इनके जो फिन्स हैं वो लिम्ब लाइक लगते हैं. तो ये सरफेस पे रहने वाली प्रोटोप्टेरस जो है ये सरफेस पे रहने वाली फिश है. एंड अमेजिंग, ये इट कैन वॉक. ये जो इसके फिन्स हैं ये लिम्ब्स की तरह काम कर सकते हैं और ये वॉक कर सकती है पानी के नीचे, मीन्स सरफेस पे. ओके, सो दिस इज स्पेशल. थैंक यू.